Hello, everybody. Good evening. Audible, right? So all of y'all can hear me? I don't really know if you guys can, so I'd love if you could, give me like some sort of heads up onto the chat box, and we can just begin with whatever we've got for today. Now, what we're doing today is a very, very important topic. It's an important topic in the sense that it's one of those most vital set of questions that are always asked, हमेशा पूछे जाते हैं, and majorly बहुत लोगों के लिए conceptual flaw होता है उस question को लेके, which is why it is very, very important for us to know and get our basis strong, right? Because once we know how exactly should we or what exactly should be our mindset ये वाले type के questions को देखने में क्या parameters होते हैं, किस basis पे हम लोग accept करते हैं information को, किस basis पे हम लोग ignore करते हैं, I think a lot of clarity can be brought upon the moment we realize all of these little tricks or these little, uh, tiny information जो देख के हम लोग को पता चल जाता है, right? So the topic that we are going to be doing today, good evening, everybody. All right. So the topic that we are going to be doing today are going to be the most dreadful of the lot, that is main idea questions. Now I know hands down, and I can speak this for everybody. This is a popular set of question जो अधिकतर लोगों के लिए गलत जाता है. गलत primarily, like I said, इसीलिए जाता है because we get way too carried away with the information. But what we don't do is हम लोग मेन आइडिया को कभी भी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई हम लोग इतना स्वेड हो जाते हैं. सो मेन आइडिया करते समय हम लोग के पास बहुत सारा रेनिंग इन करना पड़ेगा. रेनिंग इन इज टू होल्ड बैक टू द इंफॉर्मेशन. There's going to be a lot of information that we will have to sort of compile in our head and then produce onto the options. So the agenda today is going to be कि हम लोग बात करें कि वो कौन सी चीजें हैं, what are those limelight things जो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, what are the things you have to be very cautious about, and what are exactly the perfect ingredient for the recipe called main idea. Right? Now, main ideas most of the times are asked in the versions like सबसे पहले वो लोग पूछ लेंगे which of the following is the thematic highlight of the passage, which of the following is the focal point of the passage, what is the aim of the author via the passage, what is the summary for the passage, give a conclusion to the passage, what is the assumption behind the author to write the passage, what is the total title for the passage. तो ये सब टाइप के जितने भी आर्टिकुलेशंस होते हैं ना, दे ऑल कम अक्रॉस एज बीइंग मेन आइडिया क्वेश्चंस. नाउ मेन आइडिया क्वेश्चंस के कुछ शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक आई सेड, दैट इज फॉर एवरी टाइम हम लोग मेन आइडिया चूज करेंगे, इन चीजों पे हमें गौर से, दैट इज वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड ज्यादा ध्यान देना होता है ऑन टू दीज लिटिल थिंग्स दैट वी आर नाउ गोइंग टू बिगिन विद द डिस्कशन. First things first, a main idea question is basically the kind of question जो एक सेंटेंस में आपसे ये पूछ ले रहा है कि आप मुझे एक स्निपेट बता दो, जिस्ट बता दो. That is, in this one sentence, give me what is it that the passage seems to be talking about. Now, for example, आप लोग सब मूवी देख के आए, मैंने वो मूवी नहीं देखी, मैंने आपसे पूछा कि मुझे बता दो मूवी की स्टोरी क्या है. So what you're going to do is you will refrain from telling me something which is an incident or something which is incidental to an episodic happening. What you will give me is going to be a very vague and a very generalized version of what the movie was like. So आप मुझे मूवी का कोई सीन नहीं बताओगे, आप मुझे एक जनरलाइज्ड, एक बहुत ही रिलैक्स, एक बहुत ही स्ट्रेच्ड आउट आइडिया में बता दोगे कि मूवी का कॉन्टेक्स्ट क्या था. मेन आइडियाज एग्जैक्टली यही होते हैं. मेन आइडियाज आर ट्राइंग टू आस्क यू एक सेंटेंस में बता दो पैसेज में क्या समझे. अब जब हम लोग मेन आइडिया करते हैं, ऑलवेज नो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी वेयर ऑफ या कॉशियस ऑफ इज एनी इंफॉर्मेशन विच इज पैरासेंट्रिक. कोई भी मेन आइडिया क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है अगर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है but it is only giving you the information of a mention in a paragraph. Multiple paragraphs make a passage. It is not vice versa. तो अगर आपने मुझे एक पैराग्राफ सेंट्रिक इंफॉर्मेशन दे दी तो आपने इंफॉर्मेशन तो सही दे दी है मुझे, बट क्या वो इंफॉर्मेशन मेन आइडिया है? नहीं. इट्स लाइक यू सिंपली टेल मी, आई टेल यू यार तुम मूवी देख के आए, व्हाट इज द स्टोरी लाइक, एंड यू टेल मी अ सीन.
So what you've told me is right, but it is not the whole movie. It is a scene of the movie. So is the case with paragraphs. Paragraphs are a depiction, they are a happening of the bigger picture. So they're a piece of the jigsaw. They're not the whole picture. तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा option है which talks in entirety, that is more likely to be an option. But कोई भी ऐसी information जो पैराग्राफ सेंट्रिक है और बाकी पैराग्राफ्स अबैंडन हो जा रहे, they feel orphaned, they don't feel included while giving shape to the main idea. Never your answer. First. Second, जब भी हम लोग मेन आइडियाज करते हैं, हमेशा याद रखना द रूल इज टू गो जनरल, not to be specific. See, now what happens is, although जितना specific आप रहोगे उतना आप to the point रहोगे, which is true. मतलब इसमें तो कोई denying ही नहीं है. But a lot of times, the more we narrow down, the more we streamline our options, the more restrictive we become. Options main idea के हमेशा comprehensive होने चाहिए, limited नहीं होने चाहिए. They should be exhaustive options. They should be the kind of option जो पूरे passage की bandwidth को लेके चले. Not something which is just going to, shout loud this one happening. जितना स्पेसिफिक हम लोग जाते हैं, चांसेस यही हो जाते हैं. तो अगर मेरे पास कोई पैसेज है and the passage, say for example, is about one paragraph about Delhi, one about Mumbai, one about Hyderabad. So instead of picking a passage or instead of picking a main idea which will restrict itself to Mumbai, Delhi or Hyderabad, Delhi, I'd rather say cities of India because that is more inclusive than being very specific. देखो specific मिल जाए और पूरा mention हो जाए, nothing like it. मतलब वो तो top option. Nothing will precede that. But अगर वो नहीं होगा, so go general, but do not go specific. The next, a main idea must always have a protagonist. A protagonist is a lead. It is simple. आप सलमान खान की मूवी या रजनीकांत की मूवी देख के आ रहे हो, डू यू थिंक आप मूवी की स्टोरी बिना इनके मेंशन के बता सकते हो? नो, nobody can possibly do that. Main ideas may be leads होते हैं. That is, there's going to be a player, there's going to be a main person, there's going to be something or someone around which the idea will revolve. An option which is going to capture the mention of it is a paramount requirement for main ideas. तो अगर हम लोग कोई मेन आइडिया क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, द मेंशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज अ मस्ट. बिना उसके नहीं हो सकता है. अच्छा, अब प्रोटैगनिस्ट भी कभी कभी दो टाइप के होते हैं. Sometimes you have two protagonists who share the equal screen space. दो हीरोज हो सकते हैं मूवी में. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सबऑर्डिनेशन ऑफ होते हैं, मतलब एक हमारा मेन हीरो होता है, एक हमारा साइड किक होता है, सेकंड लीड होता है, राइट. नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द पैसेज हमारे पास सेकंड लीड भी हो जाता है. दैट इज, देयर आर टू थिंग्स जिनके बारे में बात हो रही है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन एग्जैक्टली प्रोटैगनिस्ट होगा. वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जो रूल हम लोग लगाते हैं, इट इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन रूल. क्वांटम मीन्स वेटेज. अब कोई भी कॉम्प्रहेंशन या कोई भी कम्युनिकेशन इतनी बात बहुत क्लियरली समझता है, दैट इज, आप किसी चीज के बारे में इतना स्ट्रेस करके इतना ज्यादा एट लेंथ तभी बात करोगे जब वो इंपॉर्टेंट है. यू विल नॉट डू इट अदरवाइज. अगर किसी चीज पे इतनी ज्यादा लगातार रेपिटेटिव तरीके से बात हुई है, बाय डिफॉल्ट वो इंपॉर्टेंट है. टू इग्नोर दैट बिट कैन नेवर बी अ गुड आइडिया दैट इज बीइंग डन. So the quantum of information rule simply says that when you have multiple protagonists and you can't choose between, just see किसको कितनी वेटेज दी है. तो अगर मेरे पास एक टॉपिक है जिसको अबाउट 7-8 लाइंस का मेंशन दिया है और किसी को 10-12 का है, तो 10-12 का मेंशन दिया है तो मतलब वो जरूरी है ना. So that can be one of the ways in which you can. But sometimes a small mention but a meaningful mention can also mark for a protagonist. So be very careful as to how exactly would you want to evaluate this piece of information. Next, जब भी हम लोग main ideas को करते हैं, there is something in English which is called the third person perspective rule. A third person perspective simply talks about the fact that देखो main idea के साथ, this is very important, pay very close attention to it. Third person perspective का rule को होता है neutral idea. Neutral idea, why? Because see, a main idea generally is the kind of option in which you have to choose ऐसा suggestive option
जो अगर किसी ने पैसेज नहीं पढ़ा है और आपका ऑप्शन उसने कंसिडर किया, सो दैट पर्सन हैज इनफ इंफॉर्मेशन कि भाई पैसेज किस चीज पे बात कर रहा है. ये इंटेंट होना चाहिए हमेशा मेन आइडिया का. अब लेट्स पिक अ रियल लाइफ एग्जांपल. हम लोग ने सबने एग्जाम्स दिए एंड जब भी हम लोग बस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा रहे होते हैं, आई आई सो विविडली रिमेंबर, हमेशा एक उड़ती उड़ता रूमर आता था कि यार इस पे देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, एंड वी गो ज़ैप कि यार इसको तो पढ़ा नहीं है, अब क्या करेंगे. सो व्हाट डू, वी ओपन द बुक, हम लोग टाइटल के हेडिंग्स पढ़ के चले जाते हैं. बट द हेडिंग इन itself is so explanatory that you can at least write 2 to 3 lines about it. That is exactly what a main idea is. A main idea has to give a view to somebody who's not read the passage, and वो इतना justified या इतना suggestive होना चाहिए कि अगर the person has not read the passage but upon reading the option you have chosen, that person is in a decent position to know कि हाँ भाई passage इस चीज पे बात कर रहा है. Of course trivial information तो नहीं चाहिए, but it is going to let the person know in a generalized manner, in a very, in a very expansive manner. That person will know कि हाँ भाई this is the likelihood of it. So that person will have a landscape image कि हाँ भाई ये इस चीज पे बात कर रहा है. टाइटल्स भी जब हम लोग करते हैं, टाइटल्स क्या होते हैं, टाइटल हमेशा इतना सजेस्टिव होना चाहिए कि अगर आपने उसको उठा के पैसेज के टॉप पे लिखा एंड कोई तीसरा इंसान who's not read the passage reads your title, that person knows what the passage seems to be talking about. So whenever in doubt, पैसेज टाइटल्स के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है कि अपने टाइटल को ऊपर लिख लो एंड सी इफ इट इज जस्टिफाइंग. बिकॉज अगर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो आंसर नहीं है. अगर वो जस्टिफाई कर रहा है बट इट इज ओनली लिमिटिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ 1 or 2 paragraphs बट नॉट द पैसेज इन एंटायरिटी, नहीं है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. Now see what happens when we choose a main idea or a title question from our perspective and not from a third person perspective. At that point of time गलती ये हो जाती है कि जब भी हम लोग किसी चीज को चूज करते हैं, see now you have read the passage, there's a lot of information जो automatically आपके दिमाग में assimilate हो चुकी है. अब जब हम लोग ऑप्शंस चूज करते हैं ना, तो हाउ डू वी ऐड द टू एंड टू, हमारा मेंटल मैथ्स कैसे चलता है, इंफॉर्मेशन इज इन द माइंड plus remaining information is from the option, mind plus option complete option, जो सही है. But now try and understand from the other person's point of view. वो he is not living in your mind, उसको कभी नहीं पता रहेगा कि आंसर क्या होना है, उसको तो वही मिलेगा ना जो आप उसको दोगे. So when you have to provide the most exhaustive and the most comprehensive of the options. So a third person perspective will always steer you clear of any sort of information. The next, explicit, implicit. I think हम लोगों ने इसके बारे में बहुत बहुत बार बात की है, but just know explicit information is not a very good idea when it comes to anything in reading comprehension, let alone main ideas. Explicit का mention होता है exclusive, implicit का मतलब होता है inclusive. अगर आपके पास passages में आ जाते हैं words like no, all, only, definitely, certainly, any, never, neither, ये सब टाइप के जब वर्ड्स आते हैं ना, तो ये सब एक्सप्लिसिट माने जाते हैं. यू आर नॉट to ever choose that as an option unless, please know this, unless your passage is explicit in nature. अब अगर मेरा passage ही only hence पे है तो मेरा आंसर इंक्लूसिव नहीं हो सकता ना. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ barn animals, then my answer can't be on only hence, right? So stay wary of any information which is going to be explicit. Try and take information which is more implicit. So implicit हमारे words क्या होते हैं? Mostly, generally, often, some, more, much, ये सब टाइप के जितने वर्ड्स होते हैं, easy going words जो होते हैं, these generally are more inclusive because these will take into consideration the idea. Next, models. छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका. Models are the worst of the lot. Models are mind boggling and they are very very confusing. Now एक तो first they are very sweet words, सुनने में इतने अच्छे लगते हैं कि लगता है कि okay this is it, but the way they play onto the sentence, they completely twist the sentence and the meaning altogether. Not something that you should ever get,
गेट कैरिड अवे विद, मतलब इनके तो बोलते हैं ना जैसे झांसे में आना ही नहीं है. Now, if I see that there is a certain idea that I have which is about surety, मॉडल का एक छोटा सा वर्ड ना कैन कुड उसको पॉसिबिलिटी में चेंज कर देगा, एंड दैट इज गोइंग टू चेंज द रिदम ऑफ द पैसेज ऑल टुगेदर. सो मॉडल्स अगर आपको दिख रहे हैं, हमेशा गो बैक टू द पैसेज टू ऑथेंटिकेट एंड सी कि क्या सच में मॉडल्स की जरूरत भी है, और इज इट जस्ट देयर टू ब्रेन वॉश अस. इट इज जस्ट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन टू विच वी माइट surrender to, we might just succumb to that as an option, but it is not, it's a trap. That is something that we know. Next, जब भी हम लोग मेन आइडियाज करते हैं, ऑलवेज नो वी आर नॉट टू एड एनी आउटसाइड इन्फो. आउटसाइड इन्फो का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्सटर्नल मेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो पैसेज में नहीं कही गई है बट ऑप्शंस में कही है. दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी एन आंसर फॉर अस. अगर मेरा पैसेज बात कर रहा है 4 सिटीज के बारे में, तो 5 सिटीज का मेंशन नहीं हो सकता है. अगर मैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ, तो कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं आ सकता है. however thick they be, however intertwined they be as concepts, but they will not work for us. So कभी भी आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है जो बात कर रहा है, सब एकदम प्रॉपर है, but again it is trying to add information which has not even been hinted in the passage. Mentioned inference दूर दूर तक कुछ नहीं है. At that point of time, that will not be an option. अच्छा, ये वाले बहुत attractive options होते हैं. They will sort of, they'll pull you towards themselves. But you have to, stay very clear of these. कि इनके तो trap में, it's a quagmire, it's a daldal. You will just keep going inside. So you might just want to, stay away from these as an option. The next thing while doing your main ideas, pay very close attention to conjunctions. Now this is a little more about the titles. अच्छा, अब टाइटल में हम लोग ने अपने प्रोटैगनिस्ट तो आइडेंटिफाई कर लिए. अब हमको ये समझना है कि how exactly should the entire formation of a title be done. Now when we tend to be doing that, कभी कभी छोटे छोटे डिफरेंसेस जैसे and और in can actually be a game changers. बट जब हम लोग जल्दी में पढ़ रहे होते हैं, हम लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते. So whenever you're trying to be doing your main ideas, or specifically, sort of getting your titles together, at that point of time, please ensure that your conjunctions and your prepositions are being, so let's also add prepositions to it, so that so your prepositions and your conjunctions need to be the right ones. जैसे एंड बोलते हैं तो मतलब दोनों प्रोटैगनिस्ट 50-50% रोल में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हुए ना. बट इन बोला तो इन इज ऑफ कोर्स अ प्रेपोजिशन ऑफ एरिया, सो दैट मीन्स एक दूसरे में है. अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये को डिपेंडेंट है. सो योर यूजेज और योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेपोजिशन एंड द कंजंक्शन, these little grammatical rules matter a lot. To that extent, a lot of times I will just tell you something. Even singular plural matters. Singular plural कैसे मैटर करता है? जैसे अगर मेरे पास कोई एक आइडिया, so if you've just seen mock 33, that's the most latest example that I have in my head. And अगर हमने mock अभी दिया and हमारे पास एक टाइटल का क्वेश्चन आया था onto the boy who was traveling for a month to this village, and he came across a couple that had been living there for about good 5 decades. वो वाला जो स्टोरी था, अब उसमें हम लोग को टाइटल लगाना था. अब एक टाइटल ने बोला था द लाइव्स ऑफ ट्रैवलर्स. अब जब पूरे पैसेज ने सिर्फ एक ही इंसान के बारे में बात किया है, तो आपका टाइटल ट्रैवलर्स कैसे हो सकता है? नो, सी हाउ मिसलीडिंग दिस इज एज एन इंफॉर्मेशन. एनी पर्सन who's going to read this and has not read the passage will think कि हाँ भाई, पैसेज ट्रैवलर्स की लाइफ के बारे में, मतलब प्लूरल. आपने तो यू हैव स्टार्टेड द पैसेज ऑन द रॉन्ग फुट, बिकॉज थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू अप्रूव, इट इज नॉट गोइंग टू ऑथेंटिकेट व्हाट द एक्चुअल ऑथर्स idea is going to be all about. So even the minutest of the things like singular plural बहुत ज्यादा फर्क बना देते हैं, right? And the last thing is, please know guys, whenever you are reading a comprehension, it has to be read from the author's vision. It's not your piece of article at all. आपका है ही नहीं. आपका नहीं है तो एक डिटैचमेंट रखो उससे.
जैसे ही, एंड यू नो विद दैट कम्स द रिस्पेक्ट ऑल्सो. जैसे अगर मेरे पास एक कोई टी शर्ट है, मेरी टी शर्ट है, मैं जैसे मन करे वैसे पहनूं, so I might just like dye it or cut it or do some sort of like some sort of trendy thing with it. I can do whatever because it is mine. Now the moment I borrow a t-shirt from somebody to wear, I don't have that sort of liberty which I would have had onto my stuff. So now I'm going to wear it with a certain, decorum. I'm going to be very, very proper and very meticulous in the way I am while wearing it. So that detachment or that authority brings out the respect. Reading comprehension को जैसे हमने ये समझ लिया, oh, this is for us to read. You will read it the way you want, and with that, you will decide what the idea is the way you want. But if we are to know what he's likely to speak, we have to step into the shoes of the author. We have to understand author क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसके नजरिए से समझो क्योंकि वो उसका है. And the moment we start reading from his understanding, our entire understanding of the tone, the emotion, the mood, the contrast, the idea, everything will just systematically come into play, right? And this last little information, which is more of a beware that I want to do, and that is while doing main ideas, everybody, please know, gone with the days जब हमारे मेन आइडियाज जो थे ना वो थ्रू एंड थ्रू एक पूरे आर्टिकल में आते थे. तो पहले क्या होता था, वी यूज्ड टू ऑलवेज गेट अ कॉम्प्रहेंशन व्हिच वाज फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. तो लोगों का मेन आइडिया का क्या था, कैलकुलेशन. फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो क्योंकि वो इंट्रोडक्शन है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो क्योंकि वो कंक्लूजन है. इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन इज व्हाट योर मेन आइडिया इज. बट नाउ the type of passages that we get are random pickouts. That is, it is not necessary that they are going to be from the start to the end. They're going to be the kind of passages which can be an excerpt handpicked from anywhere. So never ever think or never ever be delusioned by the idea कि first और last paragraph उसके actual introductions and conclusions है. जैसे ही आप पढ़ोगे कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक्चुअल में इंट्रोडक्शन है कौन सा नहीं है. बट इफ दैट इज नॉट समथिंग दैट यू नो ऑफ, मे बी दिस इज व्हाट इज समथिंग दैट यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट. All of this put together is a perfect recipe to be doing your main ideas. Main ideas को better करने के लिए please do main idea specific questions. Anytime you find summary based questions, you should know that those are going to be a good attempt. If you all are LEites, you have RSM 4, you have 2 exercises based on summary. Please ensure that you do that, because the moment you sort of gain clarity onto the main ideas, a minimum of 4 to 5 marks is something that you bank. So if we talk short, 4 से 5 number के questions English plus, so it is going to be RC plus CR में इतने तो आ ही जाएंगे. This is a minimum number, and one would not want to lose these marks, right? And these are of course very profitable if you know how to be doing it right. And for every time you do wrong, theorize your mistakes. Don't read it and let it go. You have to pen it down. Write it next to the option कि मैंने ये सोचा, ये मेरा गलत मेंटालिटी था, मेरे को इस हिसाब से अप्रोच करना चाहिए था. जब तक आप लोग theorize नहीं करोगे, the sincerity and the implementation will not come. And if that does not come, everything just goes down the drain, guys. Okay, so please make sure that you are putting all of this to practice. Jitni strategies hum logon ne baat ki, they can be exhibited onto the passage just ke tas. They can just come out on it. So please ensure that these are the kinds of things that you know. And I'm going to see you guys next time with some more strategy sessions or to the next type of question that we have. I hope this information was helpful. Please reach out to me in case there's anything that you want me to specifically take up for you guys for more clarity, so that I can also schedule it that way. Just the last 1 minute, I will take a couple of doubts from the chat box, and we're going to call it a day, guys. Okay, so ma'am, how do you differentiate between central idea and main idea? No, Aditya, it's the same. Central idea is also main mudda, main idea is also main mudda. They are all different articulations of the same intention of question. Okay, how do you improve English? Anu, read. You don't know, but reading is a magical activity. And it's just, that's the most simplest and the most toughest way to get along with English.
So if you're not reading, my dear, please just without second thought or without any delay, I need you to please press the pedal and start reading. Ma'am, I always find it difficult to wear an author's shoes, how to encounter, what should be the approach? अथर्वा पहले थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करो, ठीक है, पहले वो न्यूट्रलिटी वाले ऑप्शन से स्टार्ट करो, उसके बाद फॉर एवरी टाइम यू रीड फ्रॉम द ऑथर्स पर्सपेक्टिव, ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज आप जो भी आर्टिकल अपना पढ़ रहे हो ना, उसमें कुछ इंटेरोगेशंस ले आओ. इंटेरोगेशंस आर हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई. This is the author's perspective. This is how you slip into his shoes. Passage पढ़ लो, right? अब start answering. How did he do it? What did he do? When did he do? Where did he do? Why did he do? And you will know very, very easily what it is. This is what is called being an author's perspective. I will do very specific strategy session on the interrogations so that you know it better. But this is a good, takeaway for starters. Okay, ma'am, if the options are specific, then if the options are specific, you simply choose from the best, right? See, sometimes it's not always about the best answer. Sometimes it's about the available answer. Then at that point of time, you will have to choose that whatever remains. Because उस समय क्या कर रहा है author आपके brain को skewer कर रहा है उस हिसाब से. What is the central theme? Yes, Aditya, central theme the same है. If you just go rewind to when we started the live, I pointed out all versions of questions. Just take out 1 minute and glance through that very quickly. Be an audience to that so that you know what they are all about. My name is Suyukti Seth. So Anu was asking me, and how can I connect with you on Instagram? I am not on Instagram, so I, I I I stay clear of all of those. I'm just doing a social media detox. Take it like that. Okay, guys. Fun meeting all of you. I'm going to see you guys next time once again with some other strategy session. Until then, please ensure that these practices are something that you're putting forward, putting to use, and making the best out of it. Thank you so much, everybody. Until next time. Have a great day.